Hello, everybody. Good evening. Hope you all are doing well. So I'm sure since you guys are preparing for UPSC examination, so कल रिजल्ट आने वाला है 2021 का. Do you think कल आएगा या परसों आएगा? Comment करके मुझे बताइए and then we will proceed further. So guys, there is one more thing that since you guys have joined here, आप में से कौन कौन है, मतलब कौन से ऐसे एस्पिरेंट हैं जो पहली बार सिविल्स दिल्ली पर वेबिनार अटेंड कर रहे हैं, वो भी एक बार प्लीज कमेंट करके हमें बता दीजिए. ठीक है. सो मीनवाइल व्हाट वी वांटेड टू डू हियर, ऑफ कोर्स छुपा नहीं है किसी से दैट दिस प्रोग्राम इज ऑल अबाउट आस्क मी एनीथिंग प्रोग्राम. You know who is our guest, you know that what question you're going to ask. So rules very very simple. If you are new, I will tell you, and अगर आप पहले भी मिल चुके हैं then of course आपको पता होगा. So दोस्तों रूल्स ये है कि first we will introduce the guest, okay, we will introduce the topper and then I'll ask few questions. उसके बाद I will hand over this platform to you and then you can ask 1000 questions. लेकिन प्लीज रिपीट मत करना क्वेश्चंस, एक दूसरे को प्लीज सुन लेना बिकॉज एवरीबडी हैज वैल्यू फॉर देयर टाइम, राइट? सो शुरू करते हैं. तो दोस्तों कहते हैं कि यूपीएससी के एग्जाम में, ओके, यूपीएससी के एग्जाम में आईक्यू की जरूरत होती है, इंटेलिजेंट क्वेश्चन की जरूरत होती है. बट आई डोंट थिंक सो. जितना इंपॉर्टेंट इंटेलिजेंट क्वेश्चन है उतना ही इंपॉर्टेंट मेंटल एंड्योरेंस है, मेंटल मैराथन जिसको कहते हैं. वो मैराथन में याद है आपकी लड़ाई, आपकी रेस आपके बगल वाले से नहीं होती. मैराथन में आपकी रेस आपकी खुद से होती है, आपकी सांसों से होती है, यानी कि आपके अपने एंड्योरेंस से होती है. सो इन दिस वेबिनार वी विल आल्सो टॉक अबाउट द mental endurance, the mental state along with the NCERTs. Okay, so I am going to welcome who is very near dear friend and he's also a friend philosopher guide. He is an IPS officer, यानी कि Indian Police Services, भारतीय पुलिस सेवा. I would like to welcome, please welcome guys, Shubham Nagargoje, IPS Shubham Nagargoje batch 2020. Yeah, good evening sir. Thank you. Great to see you. Welcome once again, Shubham, and thank you so very much for giving us your time, valuable time, yaar. Thank you so very much. Thank you so much, sir. And secondly, once again, we would like to congratulate for your success and on becoming IPS officer. It's very coveted, very reputed, and I'm sure, yaar, aapne matlab jaan lगा दी होगी इसके लिए. Definitely, sir. Thank you so much. So guys, I must say please welcome Shubham Nagargoje and he has been working very hard. We know अगर आप सिविल्स दिल्ली के साथ एसोसिएटेड होगे so आपने डेफिनेटली शुभम को पहले भी देखा होगा. हम करोल बाग में भी मिल चुके हैं राजेंद्र नगर में भी मिल चुके हैं और so it is fun. I mean amazing. He's a great and amazing personality. So let us start. So Shubham, I wanted to ask one small question. And then we will hand over this platform to aspirants and they will have certain questions they will ask you. Okay, so guys, आपके पास जो भी क्वेश्चन होंगे प्लीज रेज योर हैंड एंड देन हम धीरे धीरे आपको रिक्वेस्ट करेंगे, आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए एंड देन यू कैन आस्क. Okay, so my first question to you Shubham is like, so I want to talk about the mental state, Shubham, actually. So you know, जैसा कि मैंने अभी शुरुआत में बोला कि यूपीएससी एग्जाम इज नॉट ओनली अबाउट द आईक्यू लेवल, द कंटेंट, रीडिंग कंटेंट, बट इट्स आल्सो अबाउट द मेंटल स्टेट, मेंटल एंड्योरेंस, राइट? सो ड्यूरिंग दिस जर्नी हाउ डिड यू मेंटेन दिस लेवल ऑफ मेंटल हेल्थ, लेवल ऑफ मेंटल एंड्योरेंस, क्योंकि यहाँ तो हम रोज लड़ते हैं. अच्छा, but I could not, I was not able to hear you very properly. Would you please repeat? There was some internet disconnected. Yeah, sure. So as I mentioned earlier in this video about the mental endurance, so I wanted to ask a question that आपके इस जर्नी में मेंटल एंड्योरेंस, मेंटल मैराथन, मेंटल स्टेट की क्या वैल्यू है? बहुत लोग बात करते हैं सिर्फ आईक्यू की, कंटेंट की, लेकिन आप बताओ कि क्या इंपॉर्टेंस है मेंटल स्टेट, क्योंकि इससे तो हमें डेली लड़ना है. Exactly. नहीं, मतलब आई वुड से कि जितना इम्पोर्टेंट, एज यू राइटली सेड, कि जितना इम्पोर्टेंट आईक्यू है उतना इम्पोर्टेंट ईक्यू भी है. बिकॉज आईक्यू से मतलब यू कैन प्रिपेयर, यू कैन गेन नॉलेज, बट व्हेन इट कम्स टू एक्चुअल 2 hours ऑफ प्रीलिम्स और एक्चुअल द मेंस का कंपटीशन पूरा जो 7 दिन चलता है, उसमें यू नीड योर मेंटल अवेयरनेस एंड मेंटल स्टेबिलिटी, जिसके बेसिस पे यू परफॉर्म इन दैट एग्जाम. तो
And ऊपर से mental endurance is one thing which has brought me through in all these attempts. मतलब I got selected into my third attempt. And पहले 2 attempt में जब मेरा जब prelims नहीं हुआ था, तो obviously Right. mental hardships थे काफी, तो I had to deal with those. And then So, ultimately, so, so could you please tell these people that how did you deal with those yeah, exactly. setbacks? या तो मैंने ये पहले भी बोला है ना, मतलब आई से इट क्वाइट यूजुअली एंड आई बिलीव इन इट कि मेंटल एंड्योरेंस आपका आएगा व्हेन यू हैव दैट इंट्रिंसिक मोटिवेशन। मतलब जब तुम्हारा मतलब व्हाई यू आर डूइंग सिविल सर्विसेज और व्हाई यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम, ये जब क्लियर रहेगा तो उसके बेसिस पे यू कैन गो ऑन एंड यू कैन रन दिस मैराथन क्वाइट इन अ वेरी एफिशिएंट मैनर। वरना अगर क्लियर ही नहीं रहा कि तुम कर क्यों रहे हो ये चीज, तो फिर ऐसा होता है कि मतलब यू फेल इन सम एग्जाम, यू फेल इन प्रीलिम्स, यू फेल इन मेंस, एंड देन ऐसा लगता है कि एवरीथिंग गॉट ओवर एंड देन कंटिन्यू करने की इच्छा नहीं होती है। तो फर्स्ट थिंग इज गेटिंग क्लियर आइडिया कि व्हाई यू स्टार्टेड दिस जर्नी। एंड उसके बाद तो फेलियर्स तो ऐसा एग्जाम का पार्ट ही है, फेलियर्स तो यू यू विल फेल, डेफिनेटली यू विल फेल एंड यू विल अल्टीमेटली सक्सेड। बट डीलिंग विद फेलियर्स इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। एंड मेंटल मतलब मेंटल प्रिपेयर्डनेस के लिए व्हाट आई यूज्ड टू डू इज आई यूज्ड टू प्रैक्टिस विपासना। एंड मैं रेगुलर मेडिटेशन करता हूँ, मतलब अभी भी करता हूँ। Wow. तो दैट्स वन थिंग आई वुड सजेस्ट, जिसकी वजह से यू यू रिमेन मेंटली काम एंड ऑल्सो यू आर लिटिल बिट डिटैच्ड विद द प्रोसेस। क्योंकि क्या Right. होता है ना, मतलब व्हेन यू आर टू मच अटैच्ड, दैट्स आल्सो नॉट अ वेरी गुड थिंग। Right. Right. Great. One last question from my end. उसके बाद मैं या privilege खो दूंगा आपसे सवाल पूछने का because this is all about you aspirants which क्यों है which ना, is या yeah available here. So one last question. अच्छा कहते हैं शुभम कि लाइफ में एग्जाम्स होते हैं लेकिन एग्जाम को अपनी जिंदगी बना लेना ये कहाँ तक सही बात है? देखो आई वुड से कि एग्जाम को जिंदगी बनाना वुड नॉट बी अ राइट थिंग। Right. बिकॉज मतलब व्हेन इट कम्स टू यूपीएससी और एनी अदर एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का सिनेरियो ऐसा है कि सक्सेस रेट काफी कम है। तो डेफिनेटली एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट रहना चाहिए। एंड यू मेक यूपीएससी और एनी सिविल सर्विसेज एज योर लाइफ, बट ओनली टू एन एक्सटेंट कि यू आर पुटिंग योर एफर्ट्स। मतलब जब तक एफर्ट मारने के लिए तुम्हें वो पुश करते रहेगा तब तक ठीक है। बट इफ यू आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट द फेलियर्स, देन दैट वुड नॉट बी अ राइट थिंग। Right. तो मतलब एकदम ही ऐसे 1 and 0 का गेम नहीं है, मतलब यू कैन नॉट मेक दिस एग्जाम एज योर लाइफ एंटायरली। Right. थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग दीज क्वेश्चंस. आई होप गाइस आपको समझ में आ रहे होंगे ये सारी चीजें बिकॉज दीज आर कोर एरियाज वेयर very least people will talk about, and I really admire Shubham for it because he's discussing these things at this platform. So um, thank you so much guys. Yahan pe we have seen a lot of people, they have come first time to attend this seminar, and Civil Theory welcomes you. I welcome you, and definitely if you stay here for like 30-40 minutes, I'm sure आप कुछ लेके जाओगे, I'm sure आप कुछ सीख के जाओगे. Shubham is very very experienced candidate. So let me check with, okay, I will ask Jigan. Jigan, could you please unmute your mic and ask your question? I think Jigan is not available. Let's ask, ये तो मेरे नाम का ही लड़का है, सिद्धार्थ. Let's ask Hello, sir. Siddharth. Jagan is back. Okay, Jigan. Who is this? Jigan, Siddharth, Jigan. Sir, hello, sir. Good evening, sir. This is Jagan. I'm from Tamil Nadu. Currently, I'm working under MP. I'm a personal secretary under MP. So, I wanted to give my attempt on 2023. So, I am also already prepared UPSC past 3 years. But I don't know, like, where I have to start and how to study and what to study. So, that's only doubt, sir. Okay. Okay, so what you should do is analyze what's your preparation level first. कि देखो कि if you have made GS का जो भी syllabus है, उसके बाद if you have made notes, and otherwise जो भी तुम्हारा prelims का syllabus है उसके notes ready है क्या, and based upon those notes are you able to solve the questions which are asked in mains and which are asked in prelims. तो यूपीएससी का जो फिलहाल का पैटर्न है उसके बेसिस पे यू ट्राई टू गेज व्हाट इज योर लेवल ऑफ प्रिपरेशन, एंड देन अकॉर्डिंगली यू कैन प्रोसीड कि जो चीज़ों का नोट्स नहीं बना है या जो चीज़ें रिवाइज नहीं हुई है उसको रिवाइज कर लो थरोली, एंड देन जो नहीं हुआ है उस पर फोकस कर लेना फिर। Yes, sir. Thank you, sir. Sir, even I have one more doubt. The CSAT, actually, I'm art student, so I'm not that much
knowledge about the CSAT, Services Aptitude Test. So Okay. how to clear that one, sir? Okay, तो सीसेट के लिए व्हाट आई वुड से इज फिलहाल जो यूपीएससी का प्रीवियस ईयर पेपर्स है 3 साल से थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ है wherein they are not asking much from logical reasoning and data interpretation and more focus is on quant. तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स अच्छे से सॉल्व कर लेना, मतलब बिफोर मूविंग टू क्लासेस का पेपर्स, मतलब जो भी अपने क्लासेस है यूपीएससी के, उनके कोचिंग के पेपर्स लगाने से पहले यूपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर्स लगा लेना सीसेट के सारे, मतलब 2014 के आगे वाले. So that way you can get a very good analysis के UPSC कैसा पूछता है. And then there are many channels on YouTube wherein you will get the tricks how to solve questions. Right. Okay, sir. Okay, sir. Sir, last one. Sorry, sir. Sorry to ask you more question because I have doubt more, but I'm already almost done something, but waiting little bit. Sir, how to cover the current affairs? We had to study past 2 years or 3 years. We are some toppers also said that we have to study around 5 years current affairs. Is it true, sir? No. I don't believe that. The thing with current affairs in current scenario is that no one is knowing from where questions are coming. मतलब वो 1 साल पहला है, 2 साल पहला है, किसी को समझता ही नहीं. मतलब 2021 का जो प्रीलिम्स का पेपर था, इट वाज सो डायनामिक एंड करंट अफेयर्स इतना रैंडम था उसमें कि यू वर नॉट एबल टू गेज कि ये आ रहा कहाँ से एंड कौन से साल से आ रहा है. तो आई वुड से कि प्रिपेयरिंग फॉर 1 and 1.5 year is sufficient. And rest, if you consider prelims, then focus should be on static portion more. मतलब focus more on static because therein you are having some definite questions. बट करंट का फिलहाल कुछ भरोसा नहीं है, तो उस पर थोड़ा कम फोकस करके स्टैटिक पे थोड़ा ज्यादा फोकस कर लेना. Okay, sir. Okay, sir. All right, sir. All right, sir. Sir, and interview only, sir. So, sir, I just could you tell me your opinion? Actually, today I went UPSC interview in New Delhi. Actually, today's last date, 2021. Yeah. So I talked to around 10 people, sir, about like how their experience. I took them their knowledge, and sir, the UPSC chairman. They will ask very like multiple questions or very difficult questions. Even sir, I am really fear about the interview only, sir. I am really fear about the interview. Look, I don't think you should be that scared with the interview process because one thing is it's a final stage. First, you will have clear prelim means, and interview is overall your assessment of personality. So, matlab, even if they ask some 2-3 questions which are very difficult and you are not able to answer, then also it won't make much difference. If you are having or you are carrying a personality which suits the civil services in their aspect, then they will definitely select you and they will award you good marks. So interview ka, I don't think you need to bother so much. And also questions are based upon मतलब DAF पे based रहता है, तो what people have written in their DAF उसके accordingly questions आते हैं. So we won't be able to answer all the questions, and it's quite all right if you are not able to answer all the questions. वहाँ पे मतलब they are not testing your knowledge per se, but it's more about your personality. So I don't think you should be much scared about interview. Okay, sir. Okay, sir. Thanks, sir. Thank you so much, sir. Thank you so much, Jigan, for asking, and thank you so much, Shubham, for answering it. So, guys, one more thing, because if you follow Civils Daily IS YouTube channel, so you can see me everywhere. Okay, so you will get bored of seeing me. But I went UPSC Bhavan. I took a couple of interviews. Even Shubham was part of that interview, though he was not at the Bhavan. But we met coincidentally. So there are several interviews wherein you can learn not only about how the interview gets conducted, but also they talks about their journey, their strategy for prelims, for mains. So I would request you, if you have come here for the first time, then definitely you must visit our YouTube channel. Okay, so let me ask next aspirant Siddharth. मेरा ही नाम है. Please unmute yourself or ask your question. हेलो सर, गुड इवनिंग. मेरा Good क्वेश्चन evening. ये था कि हर 1 महीने 1.5 महीने में ऐसा लगता है मुझे कि मैं स्ट्रेटजी से हट जा रहा हूँ, मतलब कि क्लूलेस स्टडी करने लग रहा हूँ कि क्या जरूरी है, क्या इम्पोर्टेंट है. मतलब ऐसा फील होता है कि आई लॉस्ट इन द जंगल. तो इसको कैसे कंट्रोल किया जा सके? ओके, मतलब देखो ये फर्स्ट थिंग ये क्वाइट मतलब कॉमन चीज है. मतलब पहले तो इससे डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये होते रहता है. इवन इट हैपेंड विद मी ड्यूरिंग माय इनिशियल अटेम्प्ट्स. बट द वे टू डील विद दिस इज कि जब तुम स्ट्रेटेजी बना रहे हो फर्स्ट टाइम,
तो उस टाइम ही काफी टॉपर्स का एनालिसिस कर लो, तुम्हारे प्रिपरेशन का एनालिसिस कर लो, एंड मेक अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी कि एंड देन यू ऑल्सो डिसाइड कि अब मैं इस स्ट्रेटेजी बना रहा हूँ, ये स्ट्रेटेजी बना रहा हूँ, मैं ये प्लान बना रहा हूँ. You put in some 2-3 days in it, no issues with that. But when you make that dedicated plan and that strategy, then stick to it. मतलब उस पे ट्रस्ट करने की जरूरत है तुम्हें, because मतलब unless and until you trust yourself and your strategy, you won't be able to succeed. तो मतलब मैं वही बोलूंगा कि पहले ही स्टार्टिंग में एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी बना लो and then stick to it. Okay, sir. Thank you so much. Right. Thank you so much, Shubham, for answering it. संस्कृत में एक कहावत है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि. जैसा तुम देखोगे देश को, दुनिया वैसे ही दिखेगी. सो इफ यू थिंक दैट भाई प्रॉब्लम है तो दुनिया में आपको प्रॉब्लम दिखेगी. इफ यू थिंक नो देयर इज अ सॉल्यूशन एंड आई फील मोटिवेटेड एंड इंस्पिरेशन, द वर्ल्ड विल बी एट योर डोर. So thank you so much, Shubham, for answering it. We have got next candidate, Subramania Bharati MS. Would you please unmute yourself and ask him? Good evening, sir. Sir, I'm Subramanya Bharati and I'm from Tamil Nadu. I'm in the first year of my graduation. Sir, my doubt is, sir, answer writing is an essential part of our preparation, right? So, sir, I'm currently reading Lakshmikant. My doubt is whether I should start my answer writing practice while reading the Lakshmikant or after completing it. Yeah, definitely answer writing is a very crucial part. But I think you can first, what you do, you are quite at early stage of your preparation, means you are in first year itself. So what I would suggest is first go through the reference books, take the holistic understanding of all the subjects, and when complete Lakshmikant first, then go through GS2 ka paper, and then solve the previous year ka, whatever questions are being asked in the mains. So I would suggest for you who is in first year only, I would suggest to complete the syllabus first and then go for answer writing. Thank you, sir. Thank you very much. Great. Thank you so much for asking that question and replying. Thank you so much, Shubham. We've got next aspirant called Hemaradi. I think Hemaradi A. Could you please unmute yourself? Good evening, sir. Good evening, buddy. So myself, Hemreddy, I am from Karnataka. So I have the doubt with the current affairs, how to make a notes for Hindu analysis. Or so I read a Hindu daily, but I'm not able to do a notes for effectively for that. So I got confused with that. Can you explain how to notes make for the Hindu newspaper? Yeah, sure. So look, what I did is many toppers have very different strategies while making notes. I used to rely upon coaching classes, institutes like Civils Daily and other institutes for current affairs. And I did not make notes out of newspaper myself because I thought that I'll read editorials, I'll get the analysis, and I'll get those analytical skills in me. And whatever factual questions are being asked in UPSC and whatever factual news are to be covered, those would be covered by the coaching classes. So you can rely upon the magazines also. That's what I used to do. I did not make newspaper notes. I relied only upon editorials mainly. Okay, sir. So other than that, I am confusing with the previous year question papers. Means now I am in a second year degree of BCom. So I completed NCERT full of 42 NCERT. So I daily analyze the previous year question papers of UPSC. So I'm not sufficient with means like how the UPSC construct the questions. So on the basis of NCERT, on the basis of standard books. So I'm not able to analyze the fully of 100%. So how can I analyze the previous year question papers? So I'm confused with that. Okay. So Okay. So I think analysis of previous paper, you should focus upon means how you are approaching the question, and then seeing your approach is right or wrong. Means because the thing is the questions will not be entirely based upon NCERT. It will be some mixture of NCERT, then current affairs, and many other things which can be mixed in, means even reference books. So I think analysis should be not finding out UPSC is asking questions from which source, but the analysis should mainly deal with how to approach questions which are asked in UPSC. तो वो approach पे you need to work. Intelligent guess we call it, or means trying to solve and applying some logic, and then saying that logic is right or that logic is wrong.
and what other ways you could have approached this question, then you would have got this answer right. So I think that approach is more important rather than finding out the sources from where the questions are coming. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you so much. All right. Thank you so much, Shubham, for Thank you. answering it. We have got next aspirant called Pankaj Kumar. Pankaj ji, unmute yourself, please, and ask your question. Hello, Shubham. Hello, Siddharth. Yes, So hello. my first question is about the NCERT part because I am not reading NCERT books nowadays. So I am just following the reference book like M. Rashmikant and some other books as well. So I was little bit confused last few days because I was just reading and studying continuously. I thought that I'm just covering my syllabus directionlessly. So I just wanted to ask one more question. The first question is, how much time should I spend to cover my syllabus? And the second question, what about, so what was your optional subject, Subham, during your Okay. preparation, and what all challenges were there when you were preparing for the examinations? Okay. So coming to your first question, how much time you should take to complete the syllabus? It depends quite on person to person, and also how much time you are getting in a day to prepare and how much you are studying. So that will vary. I would say obviously you should complete it as soon as possible, means put in your full efforts, and at least do reference books and NCERTs as soon as possible. And then afterwards you can switch to mains ka syllabus and make notes according to mains ka syllabus. These two things are very important. And coming to second question, my option was anthropology. Okay. Yeah, that's good. But I was just thinking about my optional subject recently, and I thought to take geography as my optional subject. So would it be a good choice for me? Well, a bit if you are having some background in geography, then it's even better. And otherwise also if you are having interest in geography, and if you have gone through syllabus and you find the syllabus interesting, then it's absolutely fine. Yeah, syllabus is interesting, but I think the syllabus is easily available for geography. But I pick history, so it would not be easy for me to collect all the syllabus and just cover all the syllabus in time. But then obviously you should consider the resources part also. And if resources are easily available for geography, then you can proceed for geography if you are interested in it. Okay, that's good for me. Thank you. Thank you. Yeah, thank you. Thank you so much, Shubham, for answering this. We've got next aspirant called Charan. Charan, okay. Charan, please unmute yourself and ask your question. Hello, sir. Hello, buddy. Hello. Hello. Yeah. Hi, Shubham. Sir, actually, I Hi. have seen your interview in editor page also. So, my question is how to handle UPSC and RBI preparation simultaneously and how to track it without affecting my UPSC preparation, sir. Have you prepared it for a year long, or you have any, you have any perfect strategy to complete it in short time with UPSC background, sir? Okay. Yeah, so means I cleared RBI also because I prepared for RBI when I failed my second prelims. In second attempt of UPSC, I could not clear prelims, and then I started preparing for RBI, and I prepared for I think hardly 2 months, and not more than that. But the preparation of RBI can be done parallelly to UPSC. But when exams are at the same time, and it's not possible when the exams are same time because you are having your RBI this year on 28th of May, that is day after tomorrow, and 5th of June is your prelims UPSC. So in these scenarios, you cannot do both the exams parallelly. Only when you are done with UPSC and then you are having time for preparing for RBI, then I think you should proceed to RBI also. And also, I would like to highlight that if you have given your 3-4 attempts in UPSC and if you are looking for backup option, then you can consider seriously doing RBI ka preparation. Okay, sir. This coming UPSC attempt will be my second attempt, and I am Okay. 26 now, sir. So I am thinking of having a backup or something. Is it right or wrong to think about backup at this age, sir? No, it's having
having thought of backup is a good thing because you also need to be a little bit independent when it comes to preparation. And UPSC preparation, it's also based upon a little bit of luck, and it can continue for 3-4 attempts also. So in that scenario, if you are not very much financially independent, then you can consider having a RBI ka backup and other exams also. Right. Sir, and one last thing I want to know, sir. As I know that you are part of civil study, and what are the perfect sources you followed for RBI as you followed for UPSC like civil study? Which is a reliable thing? Yeah. So for RBI, I mainly relied upon EduTap only. Since I purchased that EduTap course, and I relied on it for phase 1 and phase 2, both the things. So I think, Sharan, that is it, right? So I hope you got the answer. Thank you so much, Shubham, for answering it. You've got next aspirant called Akash Mitra. Mitra, please unmute yourself and ask your question. Yes, sir. First of all, my countless salutations to you and Shubham, sir. Thank you so मैं much. सर यूएपी 2023 बैच का अभी जस्ट ज्वाइन किया हूँ 1 महीने पहले. तो मेरा एक्चुअली है सर 23 मेरा लास्ट अटेम्प्ट है और अभी मैं एनपीसी लिमिटेड में जॉब में हूँ. तो और मेरा प्रिपरेशन का लेवल जो है ये मेरे मेंटर को ही पता है. एक्चुअली वो तो एकदम जीरो लेवल पे है. तो अभी एकदम तो यू कैन से डू और डाई सिचुएशन है क्योंकि ये मुझे करना है और उसका रीजन भी मेरा क्लियर है, मोटिवेशन सब कुछ क्लियर है. लेकिन प्रॉब्लम ये है सर कि पढ़ाई ठीक से हो नहीं पा रही है और एज माय प्रिपरेशन लेवल इज एट लगभग जीरो लेवल पे है. तो मुझे कुछ नॉलेज भी नहीं है, तो एकदम सब कुछ पढ़ना है. और इससे पहले एक कोचिंग जो जैसे मुझे पता नहीं था पहले सिविल डेली के बारे में, तो वो दृष्टि आइस का जो इंग्लिश ही है तो उसका बुकलेट ये जो है वो मैंने खरीद लिया था. तो वो यहाँ पे पड़ा हुआ है. तो एक तो स्टैंडर्ड सोर्सेस है, एनसीईआरटीज है, और एक वो है. तो ये तो हो गया समाप्त. तो अभी मैं बहुत कंफ्यूज स्टेट में हूँ और पिछले 3-4 साल से पढ़ाई तो किया नहीं मैंने. तो अभी जो मेरा स्टेट है, मेमोराइजिंग पावर जो है वो खत्म हो चुकी है. तो इस टाइप का स्टेट में हूँ. तो तो आपके मेन क्वेश्चंस क्या हैं वैसे आकाश? मेन क्वेश्चन है सर कि मैं कैसे मेरा स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए. और वो जो समाचार मंथन का जो ये है वो तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन जो इंफॉर्मेशन है उसको रिटेन नहीं कर पा रहा हूँ. और जो कंसंट्रेशन है पढ़ाई का वो कैसे ये करना है, यही क्वेश्चन. ओके. और मेरा लास्ट अटेम्प्ट है 23. Okay. मतलब I would say कि if you are in a do and die situation, that's a very good thing to be into, because when you are not in those situation and when you don't assume yourself to be in this, then उतना effort निकलता नहीं है. So I think if you are in do and die situation, तो the most important thing is to put in the efforts. कि बहुत ज़्यादा मेहनत करो. एंड आई वुडंट एग्री विथ यू कि तुम्हारा मेमोरी पावर खत्म हो चुका है. आई डोंट थिंक इट्स द थिंग, बिकॉज मेमोरी पावर इज क्या रहता है, मतलब बेसिकली यू नीड टू मेक नोट्स वेरी थरोली एंड यू नीड टू रिवाइज दोस थिंग्स. अगर नोट्स नहीं बनाओगे, उसको रिवाइज नहीं करोगे, तो किसी को भी याद नहीं आएगा वैसे तो मतलब पहली चीज इस पे फोकस करो. एंड ऑल्सो इफ यू हैव सिलेक्टेड योर ऑप्शनल, देन इट्स अ गुड थिंग. नहीं तो फिर ऑप्शनल एक कौन सा लेना है वो एक उस पर थोड़ा ध्यान दो. सर मैंने केमिस्ट्री से एमएससी किया, तो इसलिए मेरा ऑप्शनल केमिस्ट्री है. और अच्छा, देन तो ठीक है. मतलब फिर ऑप्शनल के भी वैसे उसी तरह से नोट्स बना लेना, और केमिस्ट्री के जो भी यूपीएससी के पहले के टॉपर्स रह चुके हैं उनका स्ट्रेटेजी देख लेना कि उन्होंने केमिस्ट्री में स्कोर कैसे किया है. एंड इवन फॉर जीएसपी, मतलब यूपीएससी मेंस का, तो जब इफ यू आर इनिशियल अगर प्लान कर रहे हो प्रिपरेशन करने का, तो सी टॉपर्स का वीडियोस एंड ड्रॉ सम कॉमन थ्रेड्स फ्रॉम टॉपर्स का वीडियोस, एंड उसके बेसिस पे एक स्ट्रेटेजी बनाओ पहले तो अच्छे से, and then stick to that strategy. And when it comes to concentration and focus, then I would say कि at least when in the initial part, start with something which you find interesting. इंटरेस्टिंग चीजों से चालू करो. अगर हिस्ट्री पसंद है तो हिस्ट्री, पॉलिटी पसंद है पॉलिटी, एंड फिर एक बार बैठने की आदत लग जाएगी एंड पढ़ाई की आदत लग जाएगी, देन यू कैन स्विच टू अदर सब्जेक्ट आल्सो. थैंक यू सर. Great. Thank you so much, Shubham, for answering it. I wanted to add something here. Who was this? This was Akash, right? So just wanted to add here a little bit that
जितने भी नेगेटिव वर्ड्स अगर आप खुद से बोलते रहोगे ना अपने आप को कि मेरी मेमोरी कमजोर है, मैं डिप्रेशन में हूँ, मुझे नहीं आता है, ओके, अगेन एंड अगेन दिस विल गेट एम्बेडेड इन योर माइंड, और जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, न्यूरॉन्स एक दूसरे को मैसेज भेजते हैं, एंड द सेम थिंग विल हैपन. एक मोमेंट ऐसा आ जाएगा कि आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा, लेकिन वो चीजें होती रहेंगी, वो एक्शंस होता रहेगा, वो नेगेटिव इंस्ट्रक्शंस होते रहेंगे. ओके, सो वो उपनिषद में एक संस्कृत की कहावत है कि वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम, मतलब कि नो नेगेटिव इंस्ट्रक्शंस टू योर माइंड. द मोमेंट यू विल स्टार्ट यूजिंग फ्रीक्वेंट पॉजिटिव वर्ड्स, अपने आप सब ठीक हो जाएगा यार. आई वुड से, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मेरी वीडियो है यूट्यूब पे, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड. आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड यू प्लीज गो एंड वॉच दैट. 10 minutes will change your life, I'm guaranteeing you. Okay, sir. Okay, sir. Great, guys. So next up, we've got Nazneen. Nazneen, please unmute yourself and ask your question. Hello, sir. Hello. Good evening, sir. Sir, Good evening. actually, I have attempted the UPSC in last year, in 2021, just after my graduation. Okay. But now I am unable to concentrate in study after failed in pre. So how can we motivate ourselves after fail? Okay. So it's quite simple कि मतलब exam is not just about your prelims. उसमें मेंस भी है, उसमें इंटरव्यू भी है. So you need to consider एग्जाम पूरा एक साल चलता है, and you have to be thoroughly motivated. जैसे सिद्धार्थ सर ने बोला था कि इट्स अ मैराथन, तो मतलब वही आई वुड अगेन रीएम्फसाइज के जो मोटिवेशन है, अगर वो एक्सटर्नल मोटिवेशन है आपका, देन हाउ यू विल बी इंस्पायर्ड और मोटिवेटेड फॉर हार्डली अ डे और वीक और मंथ. बट फॉर क्लियरिंग यूपीएससी यू नीड दैट इंटरनल मोटिवेशन. तो पहले फाइंड आउट कि व्हाई यू हैव स्टार्टेड दिस जर्नी, एंड सच में यूपीएससी करना है क्या, मतलब हाउ मच इट अफेक्ट्स यू. मतलब मेरा ऐसा था कि ये नहीं हुआ मेरे से, तो आई वाज नॉट हैविंग वेरी मच बैकअप ऑप्शन. मतलब मैं आरबीआई दिया था, लेकिन मैं आरबीआई में जाके फिर से यूपीएससी का प्रिपरेशन करने वाला था. तो यू शुड बी दैट मच क्लियर कि ये जर्नी स्टार्ट क्यों की है तुमने, एंड इफ यू आर वेरी मच क्लियर विद इट, देन वो मोटिवेशन अंदर से आएगा, एंड यू विल स्टडी फॉर मतलब ईयर लॉन्ग. इट वोंट बी एन इशू देन. Okay, sir. Thank you, sir. Exactly. Thank Exactly. you. I really like the answer, Shubham. Thank you so much. ये वही बात हो गई कि if you don't know where you are coming from, how can you appreciate where you are going? Go on. Exactly. Right. So this is one of the best. शशि थरूर ने ये कहा था, तो Yeah. मैंने नोट कर लिया था. So these of course these are some learned, very experienced personalities, and of course बहुत ही important है ये समझना. So next up we have Niketa. Niketa, could you please unmute yourself and ask a question? Yes, sir. Good evening, sir. Good evening. Sir, I have a bunch of questions because initially I have started my preparation. So, like I have gone through the syllabus. So it has one-liner and one-word topic. So I don't know how to go into the detail of that topic. Suppose if we read a newspaper, so how to analyze anything that if it is relevant or not. And I want to know that. Exactly. देखो मतलब this thing happened with me also when I started my preparation, because GS का syllabus तो they have written as you said one liner नहीं तो one word है, but how you will be able to know कि कितना depth में जाना and what is expected is after analyzing the previous year papers. तो मतलब prelims का paper देख लो कि prelims में उस topic से या उस one liner से क्या पूछ रहा है, and even same for the means कि अगर एक आधा वर्ड लिखा है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पे वो क्वेश्चन किस टाइप के पूछ रहे हैं, एंड बेस्ड अपॉन दैट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि कितना डेप्थ में यू नीड टू स्टडी दैट टॉपिक. Okay, sir. But sir, if we go through the newspaper, तो उसमें जैसे डेली न्यूज़पेपर में करंट अफेयर आता रहता है. So if we read that current affair, that article, we need to go through the PYQ कि इससे रिलेटेड कुछ आया है कि नहीं, ऐसे मतलब थोड़ा देखना होगा. देखो मतलब उसमें तो जो थिंग इज यू नीड टू मतलब जो भी सिलेबस से रिलेटेड करंट अफेयर्स है वो तो तुम करते रहना. मतलब यू हैव टू डू इट बिकॉज एनी टाइम क्वेश्चन कैन पॉप अप फ्रॉम दैट, एंड इफ इट इज नॉट रिलेटेड टू सिलेबस देन यू कैन स्लाइटली गो थ्रू इट वंस, and you need not focus more upon the notes making part of it. जो डायरेक्टली सिलेबस से रिलेटेड है उसका यू कैन मेक नोट्स ऑल्सो, एंड जो सिलेबस से ज़्यादा रिलेटेड नहीं है वो एक बार पढ़ लेना अगर तुम्हें इम्पोर्टेंट लगता है तो.
and don't focus much upon the note making then. मतलब this way you can deal with it. So उसको फिर याद कैसे रखें? मतलब should not we make notes out of it? मतलब कोई देखो भी मतलब अगर if you find it that important तो मतलब तुम्हें एक तो मतलब the previous year papers तुम analyze करोगे, then you will develop this analysis power wherein you can gauge कि ये important कितना है. Then if you find it very important, then you can make notes out of it. But if you are not finding it important, then तो जरूरत नहीं है ना. Okay, sir. So, I want to know that what should be the ideal 1 year strategy for covering the syllabus with the optional? देखो मतलब ऐसे 1 year strategy तो it will depend upon person to person only. मतलब एक broadly बता देता हूँ मैं कि लास्ट के 3-4 महीना रख देना prelims के लिए, because उतना टाइम तो लगता ही है given the nature of prelims these years. And बाकी का टाइम start GSM optional parallelly, कि GS के लिए थोड़ा टाइम डिवोट करो and optional के लिए थोड़ा टाइम डिवोट करो. एंड आफ्टर उसमें भी स्टार्टिंग में कुछ ऐसे टॉपिक्स कर लो जैसे जो मेंस में है एंड प्रीलिम्स में जरूरी नहीं है, जैसे एथिक्स हो गया तुम्हारा, इवन ऑप्शनल भी हो गया, एंड वर्ल्ड हिस्ट्री जैसे टॉपिक्स हो गए. तो डू दिस टॉपिक्स अर्ली एंड देन डू जीएस का टॉपिक्स व्हिच आर कॉमन विद प्रीलिम्स का टॉपिक्स आल्सो, एंड दिस वे यू कैन प्लान फॉर द एंटायर ईयर. Okay, sir. Sir, is coaching necessary? Should we join coaching for covering the syllabus, or anybody who have no idea about how to go about the to cover the syllabus or to know the things? देखो आई वुड से कि मोर देन कोचिंग व्हाट्स इम्पोर्टेंट इज यूपीएससी गाइडेंस एंड मेंटरशिप. क्योंकि ऐसा होता है कि कोचिंग में यू हैव मतलब थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड उनका एक एक बंदे पे ध्यान नहीं रहता ऐसे टाइम पे. तो वैसे टाइम पे इफ यू ज्वाइन कोचिंग यू विल बी एबल टू गेन नॉलेज, बट जो स्पेसिफिक डायरेक्शन चाहिए एग्जाम निकालने के लिए, जो गाइडेंस चाहिए, वो वहाँ पे नहीं मिलेगा. तो आई वुड रिकमेंड कि इफ यू आर if you are having some mentorship guidance program, then actually वो join कर लेना, and according to mentors का जो भी guidance है उसके हिसाब से you can study well. Okay, sir. Sir, I have one last question. Sir, I'm confused between the optionals, geography, anthro, socio, and pub-ed. So I'm more inclined toward the geography because it is my interest. I don't have any background in it. But due to the short syllabus of anthro, socio, and pub-ed, आई थॉट कि ये भी मैं ले सकती हूँ या नहीं, तो मुझे मतलब कैसे करना चाहिए ऑप्शनल के लिए? देखो आई वुड से कि एंथ्रो का थोड़ा शॉर्ट सिलेबस है, यू कैन कंसीडर, बट पब सोशो एंड सोशो का भी मतलब सिलेबस काफी बड़ा है, एंड मतलब सिलेबस कितना छोटा है कितना बड़ा है इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है हाउ मच इंटरेस्टेड यू आर इनटू दैट ऑप्शनल, because you have to read it for year long if you are clearing in first, and if you are not clearing then एक 2-3 साल पढ़ना पड़ेगा. तो you need to have that much interest. तो आई वुड से कि इंटरेस्ट पे ज्यादा फोकस करो rather than सिलेबस कितना बड़ा है. एंथ्रो ले लिया, इंटरेस्ट नहीं है, सिलेबस छोटा रहेगा तो you will not be able to cover that small syllabus also. So can you tell me the benefits of taking anthro, some plus point of it? मतलब if a candidate want to know about the syllabus, about the subject, sorry. तो एंथ्रो का मतलब स्पेसिफिक बेनिफिट्स है that first thing it depends upon your interest only. Well, I was more interested into evolution and the tribal ka part, so I took anthro as optional. And other thing is resources are available. मतलब you can easily get resources in Old Rajendra or Delhi or anywhere in India. Resources का उतना issue नहीं है. And another more important thing is many toppers have cleared from anthro recently, and उनके videos है, so you can be able to make a good strategy out of it. Sir. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Great. Thank you so much, Shubham, for answering like bunch of questions in quickly. So there is somebody with the name of what's his name? AP. Okay, and what he has mentioned is an amazing quote. The comeback is always stronger than setback. क्या बात, बढ़िया बढ़िया, amazing guys. So ऐसे ही quotes लिखते रहिए and should be full of inspiration, rather motivation. Okay, so choose your role model, choose your hero, सही तरीके से choose करो and then follow them. गाड़ी आगे निकल जाएगी आपकी. In fact, the way Shubham is discussing everything, discussing person generally, आप role model मान सकते हैं शुभम को. Great. So next aspirant is Shraddha Jadhav. Could you please unmute yourself and ask your question?
Thank you so much, Siddharth. Thank you, Shubham, for a great session. So, just to give a brief background about myself, I am actually working full time as area operations manager. I'm a postgrad. I've done my MBA, and now the reason I'm sharing this is I have a hectic full time job. And although I'm not financially dependent on anybody, I have time constraints, like serious time constraints. So I see people preparing full time year after year since their graduation and everything. But back in those days, my priorities were different. This is the first attempt I'm planning to give in 2023. I've just started looking into the syllabus and I have bought some NCERTs and everything, but I'm not sure how to go about my preparation because if I'm giving my first shot, I want to do it seriously. So I do not want to join any full-time coaching classes or anything because it's not possible for me. So like what should be the strategy for someone like me? I have a decent hang on current affairs and everything because as a part of my job, I keep the good in social sciences related subjects. So now going from here, how I'm really confused about how to strategize the study part for myself and if it is even a good option for myself because given my job and other time restraints. Yeah, exactly. Definitely a job. If you are pursuing your job, then you wouldn't be having enough time for preparing. But I think Siddharth sir has taken some sessions wherein working professionals have given their strategy. Right, Siddharth sir? Yes, we do. Yeah, so I think rather than me prepared full time, someone who has cleared while working would be a better recommendation for you. So Right. I think Siddharth sir will guide you further. Okay, so Right. it is like people do it with full-time jobs, is it? Like because Yeah, they whoever do. I've come across, they have been preparing for years and they're doing it full-time, and there's just so much dedication towards this one exam. And somewhere at this point, I feel maybe I've missed my chance. I'm 26 years No. old, by the way, and this is going to be my first attempt next year. Okay. No, I don't think you have missed a chance. That's not an issue. But when you are having limited time in your hand, the most important thing is having the right guidance. Okay, you should not be studying in some random direction and wasting your limited amount, which is very precious. So I would say, look for some mentor in CSE who has cleared, and if you are able to access it, or even contact Civils Daily for that matter. And if you get right mentorship, how you should proceed further, then that would be a right strategy, I think. Okay. And also see the videos of people who have cleared while working. And I definitely can say that, yeah, people have cleared while working. So there's no discouragement in that. You can even clear while working also. Right. So someone was cleared the exam and like I got in touch with her and she tells me because of the nature of my job, I'm already half prepared to handle all the field related challenges and everything. And I found it really funny because I have no idea about the real job that comes with it. So this is talking about way after you have cleared all the exams and interviews, and that doesn't make sense. So that added to my confusion basically. Okay. Great. So, Shraddha, here I would like to add something. Well, thank you so much, Shubham, for answering all those questions. So Shraddha, just wanted to add something here that don't take this as a challenge that you are working in a corporate job and you will have setbacks for preparing for UPSC civil services. Consider this as an opportunity. See, the corporate job you're working with, you are getting a lot of exposure, okay? You're talking to 100 people. This builds your personality, this builds your confidence, this builds how you speak in front of 10, 15, 20 people. And this is what requires in the interview. Okay. You would not consciously think that this might working, but subconsciously you're getting prepared. I'm telling you. Okay. Exactly. The next part is, yes, as Shubham rightly said, on our Civil Daily platform, specifically on YouTube, there are toppers who have worked in actually this environment, this ambience of corporate sector, and they have cleared this exam. It's all about the mindset, Shraddha, that still, even if you are getting 3 to 4 hours, and I would say that a working professional has greater chance of clearing an IELTS exam than the full time. Sure. Okay. I'll definitely go through the channel. Thank you so much.
Great. Thank you so much, and thanks Shubham for answering it. We've got next candidate called Shushant Puri. Could you please unmute yourself and ask a question? Shushant, Balak, please unmute yourself. I think maybe he's somewhere. Let's ask from Vikrant. Vikrant, could you please unmute yourself? हेलो सर नमस्कार दादा. मैं महाराष्ट्र से हूँ, तो मराठी बैकग्राउंड से हूँ. मैंने इंग्लिश मीडियम लिया है, तो मुझे मतलब कंसिस्टेंसी में भी और बाकी के प्रॉब्लम्स में भी मतलब बहुत प्रॉब्लम आ रहा है. मतलब अभी स्टार्ट किया है तो उतना कंफर्टेबल भी नहीं लग रहा. तो आपने कैसे मतलब टाइम फ्रेम में कैसे खुद को मैनेज किया और कैसे कंसिस्टेंसी अचीव की, मतलब वो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए. ओके. तो देखो मतलब कंसिस्टेंसी यू कैन मेंटेन व्हेन यू आर, मतलब तुम्हारे पास जब अच्छा प्लान है कुछ, तो मतलब पहले तो एक स्ट्रेटेजी बना लो व्हेन यू आर हैविंग डिफाइंड टारगेट. मतलब जैसे 8 दिन का टारगेट क्या है, 15 दिन का क्या है, 1 महीने का क्या है, 6 महीने का क्या है, 1 साल का क्या है. मतलब ऐसा जब प्लान बन जाएगा पूरा, देन ओनली यू कैन मेंटेन गुड कंसिस्टेंसी. वरना क्या रहता है ना, मतलब व्हेन वी आर मतलब रैंडमली जब प्रिपरेशन करते हैं अपन, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एनालाइज कि कहाँ तक हुआ है, कितना हुआ है, एंड कैसे चल रही है पढ़ाई. तो इससे अच्छा है कि एक डेडिकेटेड प्लान बना लो एंड उस प्लान के साथ स्टिक रहने का फिर. एंड इफ मतलब इफ यू फॉलो द प्लान टू सम 80%, देन ऑल्सो इट्स राइट. ये प्लान जितना तुमने जैसा बनाया वैसा 100% हो जाएगा, ऐसा नहीं रहता है. आपने मेंस ओरिएंटेड कैसे किया था, मतलब उसको कैसे यूटिलाइज किया, कैसे आपने सिलेबस को मतलब ये किया, डिकोड किया, मतलब उसके बारे में कुछ बताइए. ओके. तो मेंस का सबसे मेन है कि सिलेबस तुम्हारे दिमाग में रहना चाहिए पूरा थरोली. तो वो सिलेबस एक बार पूरा रट लो कि यूपीएससी ने दिया क्या क्या है, क्योंकि वो टॉपिक्स जब अपन करंट अफेयर्स में पढ़ते हैं तो एक मतलब वे से कनेक्टिंग द डॉट, तो अपने को वो लिंक करते आना चाहिए कि ये सिलेबस में है, ये करंट में चल रहा है, तो इस पे से ऐसा क्वेश्चन आ सकता है. एंड इवन बाकी चीजें भी जब पढ़ते रहते हैं अपन एक्सेप्ट न्यूज़पेपर ऑल्सो, तो वो एक बार सिलेबस अच्छे से कर लो. एंड प्रीवियस ईयर के मेंस का पेपर उसका एक बार देख लो अच्छे से कि मतलब प्रीवियस ईयर का जितना एम्फोसाइज करूँ मैं उतना कम है, क्योंकि मतलब एक वही चीज है जहाँ से यूपीएससी का तुम्हें समझेगा कि क्वेश्चन आते कैसे हैं, यूपीएससी क्या एक्सपेक्ट करती है. क्योंकि बाकी कुछ तो है नहीं ना, मतलब एक सिलेबस है, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. तो इन दोनों में जितना अच्छे से रिलेशन एस्टेब्लिश कर पाओगे तुम, उतना बेटर तुम्हारा प्रिपरेशन रहेगा. एंड ऑल्सो मीन्स का जैसे भी टॉपिक बाय टॉपिक नोट्स बना लेना बहुत अच्छे से. एंड वो नोट्स देखो फिर कि उससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं क्या. एंड आई वुड से कि उसमें फिर अपडेट करते रहना, जैसे भी उसमें करंट में कुछ चल रहा है उसमें, जैसे इलेक्शंस का टॉपिक एंड साइमल्टेनियस इलेक्शंस आ गया, तो उसके नोट्स फिर वो इलेक्शन के टॉपिक में ऐड कर देने का. तो ये से एक मतलब वो एक थरोली प्रोसेस, कंटिन्यूस प्रोसेस रहेगा जब तक तुम एग्जाम क्लियर नहीं करते. मतलब ऐसा नहीं रहेगा कि मीन्स का नोट्स बना लिया और रख दिया, क्योंकि चीजें इवॉल्व होती रहती है, वैल्यू एडिशन करना पड़ता है. तो always do that value addition and always add whatever is going in current affairs to your mains का notes. ओके. और सर अब अगर अभी अभी के लिए स्टार्ट किया मतलब, तो आइडियली कब मेंस के आंसर राइटिंग के बारे में कैसे सोचना चाहिए और कब शुरू करना चाहिए वैसे. मेंस का आंसर राइटिंग देखो, इफ यू आर राइटिंग 2023 का अटेम्प्ट, तो एक जब तुम्हारा थोड़ा बहुत सिलेबस कवर हो जाएगा, देन आफ्टर दैट यू कैन स्टार्ट अटेम्प्टिंग सम क्वेश्चंस. बट मतलब ऐसे स्टार्ट करो विद 2 क्वेश्चंस पर डे एंड देखो मतलब हाउ यू आर राइटिंग इट. एंड तब ऐसे टाइम रेस्ट्रिक्शन लगाने की बहुत जरूरत नहीं है. स्टार्टिंग में यू जस्ट ट्राई टू राइट जो भी पूछा है, एंड आफ्टरवर्ड्स उसको टाइम का लिमिटेशन लगाना, जैसे 10 मार्क्स के लिए 7 मिनट्स है एंड 15 के लिए 11 मिनट्स है. तो बाद में फिर टाइम पे कंप्लीट करने की आदत लगा लेना है, देन एक टेस्ट सीरीज भी लगा लेना. लेकिन इनिशियली जब एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ सिलेबस कवर हो जाएगा, तो फिर यू कैन स्टार्ट विद योर आंसर राइटिंग आल्सो. ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू. Thank you so much, Shubham, for answering it. So we'll take 2 more questions because we are running out of time. और शुभम भी अपना काफी वक्त दे चुके हैं, and time is very very valuable, guys. Time की importance सबको समझनी चाहिए. So we have got next candidate aspirant Sasi, SASI, Sasi. How do you pronounce it? Please unmute yourself. Sir, I have 2 questions mainly. So whenever you're completing topic, how do you revise? Because the topic I have covered geography 2 months back. Now I cannot recall that. So how do you revise? The second question is, sir, in mains, if we study Lakshmikant, I am taking example as quality. We have everything,
in Lakshmikant, if a question is asked on tribunals, we can only write the introduction part on tribunals. Suppose the body part cannot be written only by reading Lakshmikant. We have to rely on current sources, and that current sources don't. How do you gather information? Means by the end of prelims exam, if we don't have mains points, we cannot write the exam. How did you face this problem? And Coming to first part when revision पे focus है and मतलब देखो ऐसा है कि if you are preparing something today then उसको एक 15 दिन में तो फिर से रिवाइज कर लो यार, मतलब 15 दिन में या एक महीने में and अगर मतलब ये नहीं करोगे तो the thing what will happen is कि you'll be doing something new but you'll be forgetting what you have studied earlier. तो ये नहीं होना चाहिए. तो for this कि जो भी तुम्हारा प्लान बना रहे हो उसमें रिवीजन का भी स्पेसिफिक टाइम रखो. मतलब व्हाट आई यूज्ड टू डू इज कि मेरा एक जब भी रात का टाइम रहता था मतलब इवन मतलब दिन भर में पढ़ाई करता था एंड 10 to 11 में जो आज दिन भर पढ़ा है मैंने उसका रिवीजन करता था. एंड ऐसे ही एक 7 दिन बाद एंड 15 दिन बाद आई यूज्ड टू रिवाइज. सो एक स्पेस्ड रिवीजन नाम का कंसेप्ट रहता है कि स्पेस्ड रिवीजन रिपीटेटिव रिवीजन चाहिए रहता है जिसकी वजह से यू कैन फिट सम थिंग्स इन योर मेमोरी. तो वो स्पेस्ड रिवीजन फॉलो करना. And coming to second part, yeah, exactly rightly you said based upon Lakshmikant, you cannot attempt the entire questions of means. For that, what you need to do is go through the editorials of newspaper, जैसे Indian Express हो गया, The Hindu हो गया, and the things which you feel are important. तो editorial काफी comprehensive दिया रहता है, तो उसमें से notes बना लेना. And even after doing this, you can also rely upon the coaching institutes which are providing means ka current affairs. So these two things will suffice, I think. Means I used to do these two things. sir, my last question, sir. Sir, I'm working right now, full-time working. I don't have time to read thoroughly the entire newspaper. Can I rely on Samachar Manthan? And if am I missing anything out of the newspaper if I don't read it? How do you strike a balance between? Okay. So I would say I'm not very much aware about Samachar Manthan. So I think you can follow that if it's quite comprehensive and you feel that questions are, means you are able to address UPSC questions based upon it. Otherwise, you can go for other sources also like Civil Daily. When I used to depend upon Civil Daily, Forum Eyes, and also to Vision Eyes to a certain extent. तो जैसे करंट अफेयर्स के तो काफी सोर्सेज रहते हैं, you can rely upon it. But at the same time, you cannot miss the editorial part of newspaper. क्योंकि mains is more about analysis and putting your analysis onto the paper. So without reading newspapers and editorials, you won't be developing that knack of analysis. So critical analysis के लिए तो you need to go through newspaper at least. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. Sorry, I was mute. So thank you so much, Shubham, for answering it. Just wanted to add one more point. What Shubham has said about Samachar Manthan. Definitely. So guys, just a gist about Samachar Manthan. Samachar Manthan is that program which has been very flagship program of Civils Daily, and a lot of people, toppers, they have used it. And why they have used it? Because you will get a summary, the entire summary of a week in just 6 hours. So you have to invest your 6 hours and you can read the entire summary of a week. So that is the churn of the 1 week of current affair you can read in 6 hours. This is how we made, and that is based on the prelims and mains past year question papers. Okay, this is the gist of Samachar Manthan. That's how I would also like to add something. Yeah, वो होता है ना, because the name itself it defines समाचार का मंथन करना, समझ रहे हो आप? That's all about it. All right, so we'll take one more aspirant, which is Monish Bala Subramaniam, I think. So go ahead, Monish. You are not audible. Sir, your voice am is I audible, sir? You are audible now. Yeah, your voice is Yes, sir. Good evening, sir. Actually, my query is not about the strategy and resources. It's about what's the drive behind you that drive you this journey after 3-4 years to UPSC. And have you preferred IPS over other services, or is it like naturally you got into services? And what's the job nature, sir? What's the prospects that a person can get who's going to get into
IPS will have in the future, and what's the unique way that he can serve to the society apart from those IAS and foreign service, those services? Thank you, sir. Okay, coming to the first question, what drives me? Actually, that's very important, and I would say during my college time, I was very much involved into social service. I worked for orphanages, and I went for working with NGOs in tribal health and also cleanliness drive. I was very much into some startup competitions and social service basically. So that inspired me to look for a job which is for public service, and that's why I started preparing for IAS and UPSC. And within that, I preferred IAS over IPS, but based upon my rank, I got IPS, and I'm again trying for IAS. Also, coming to your further question, how IPS serves the society, so and how differently it is from IAS and IFS. The main thing about IPS is it maintains the law and order, and if you are having law and order and safety and security in the society, then it is very much necessary and it is the prerequisite for development. Means if there is no law and order in the district, then even your district collector cannot proceed much with the developmental work. So these two things go hand in hand, and all the services are equally important when it comes to development and welfare of people. Thank you, sir. Thank you for your insight, sir. Great. So, Shubham, we'll take one last question from Nikita. She has been with us from quite a long time. Nikita, could you please unmute yourself and ask a question? But how to use the Civils Daily app? On that app, the news are there related current affairs, whether to read or whether to highlight that and save it at another place like Evernote app and all. Yeah, I think this I will answer. Shubham is not the right person will answer this. So just to let you know, guys, Civils Daily app is under maintenance. Okay, in the next 10 days, you guys will have one of the best apps in this industry, UPSC industry, and it will be available for both platform, iOS and Android. So stay tuned. थोड़ा सा बस इंतजार कर लीजिए, भरोसा रखिए, and you will get the best app so that you can download, you can save, you can watch videos, so on and so forth. अरे आपका यही क्वेश्चन था? Come on, Nikita. Okay, I think we are done. We are done for the day. Well, let's call it a day, guys. It's been a long time now. So once again, thank you so much, Shubham. आप एक्चुअली माहौल बना देते हो, बहुत अच्छे तरीके से आप एक्चुअली आंसर करते हो टू द पॉइंट एंड वेरी क्रिस्प एंड कंसाइज. I really appreciate from bottom of my heart, and I guess guys you must thank Shubham. अब ये जल्दी मिलने नहीं वाले हैं. So you guys were lucky that you have utilized this time, this 50 minutes, बहुत productive. So once again, Shubham, really appreciate. Thank you so much time, and the entire team of Civils Daily, on behalf of these aspirants, wishing you all the best for your career. Yeah, thank you so much, sir. It was my pleasure, sir. Great. Thank you so much. Bye. So thank you so much, guys. This was IPS Shubham Nagargoje. Next week, we will have new webinar with, again, just a news I would like to share that, of course, I think the day after tomorrow, results are going to get announced. So a lot more things will happening. The buzz in the UPSC, the entire world, in the UPSC world will get, full of excitement and all. You will have new topper, new freshers, and new faces and all, with new strategy, with modern strategy. So stay tuned with Civils Daily, both website and YouTube channel, so that we can share those things with you. क्योंकि हम ये सब आपके लिए कर रहे हैं, समझे, आपके लिए ही कर रहे हैं ये सब. Thank you so much, guys. So I shall see you next week. तब तक अपना ख्याल रखिए. जय हिंद. Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Civils Daily.